Okay students, here I am going to start lecture number 4 part 2. In this lecture we will discuss the term power. I am going to start reading power. The definition of work makes no reference to the passage of time. For example, if you lift a barbell weighing 100 Newton through a vertical distance of 1 meter at constant velocity, you do 100 Newton multiply 1 meter equal to 100 joule of work, whether it takes you a second or 1 hour to do it. But often we need to know how quickly work is done. When describe this in terms of power, power is the time rate at which work is done. Mathematically, P equals to W by T. Like work, power is a scalar quantity. The SI unit of power is watt. In honor of James Watt, a Scottish physicist who invented the first practical steam engine, from equation 6.8, the unit of power is given by 1 watt. 1 watt equals to 1 joule per 1 second, or in symbol of 1 watt equal to joule per second. In the British system, the unit of power in the foot-pound per second, foot dot lb per second. For practical purpose, a large unit is often used, the horsepower foot-pound per second, which equals 746 watt. 1 HP equals to 746 watt. A unit of energy work can now be defined in terms of the unit of power. 1 kilowatt hour is the energy converted or consumed in 1 hour at the constant rate of 1 kilowatt equal to 1000 joule per second. The numerical value of 1 kilowatt hour is 1 kilowatt hour equal to 10 raised to power 3 watt into 3600 seconds. तो हमारे पास आया 13.6 into 10 raised to power 6 joule. The electricity bill that we pay are measured in the term of this unit. Okay, now हम convert करेंगे watt को HP में, ठीक है? तो हमारे पास 1 HP इक्वल होते हैं 746 वाट के, और 1 वाट में होते हैं 1 डिवाइडेड बाय 746 HP. सो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आंसर आया पावर का P इक्वल्स टू 1.50 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, उसको डिवाइड करेंगे 746 पे, तो हमारे पास HP में आंसर आ जाएगा हॉर्स पावर में P इक्वल्स टू 20 हॉर्स पावर. गॉट इट? नेक्स्ट आपके पास है असाइनमेंट. इट इज़ योर होमवर्क, ठीक है? एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ at 250 watt, calculate the quantity of heat generated in 10 minutes. आपने क्या करना है, हीट कितनी जनरेट होती है वो आपने कैलकुलेट करनी है. हिंट है आपके पास 10 मिनट्स है, मिनट्स को पहले कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, ठीक है? और आपके पास ये है डिफाइन एंड एक्सप्लेन एफिशिएंसी, डिफाइन एंड एक्सप्लेन वर्क. इट शुड बी डन ऑन योर नोटबुक. ये तीनों चीज़ें आपने अपनी फिजिक्स की नोटबुक पे अटेम्प्ट करनी है. थैंक यू.